Ji, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing good. As I mentioned on the WhatsApp group as well as in the last lecture, that this is going to be a recorded lecture. In the last class, we discussed feasibility analysis. Unfortunately, I didn't receive any questions on the WhatsApp group. So I'm assuming that all of you are comfortable and all of you understood what I taught you in that lecture. Today, we are going to discuss business models. Technically, इस lecture के बाद I think this is pretty much the outline of your final project and presentation as well. क्योंकि you have discussed we have discussed what is entrepreneurship. You have already come to know that how do we identify opportunity, what are the ways of identifying an opportunity. We have seen feasibility analysis and different parts of feasibility analysis. Today we are going to discuss business models, and that is pretty much what you are going to cover in entrepreneurship. इसके बाद we are going to discuss I guess marketing strategy for startups, और मे बी अगर हमें टाइम मिलता है तो वील ऑल्सो डिस्कस ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स. सो वो हम देख लेंगे हमने क्या चीज़ें ऐड करनी है. मे बी आई विल डू बिजनेस प्लान्स विद यू. वो अगर टॉपिक मैं आपको करवाता हूँ देन यू हैव टू राइट अ बिजनेस प्लान. अभी इसको देख लेते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे. एज फार एज द सेशनल्स आर कंसर्न, प्लीज कीप काम because there are so many things going on. Inshallah, hopefully by tomorrow night, that is Friday night, I'll send you your sessional evaluation on WhatsApp group, जहाँ पे all of you can see the marks, and then later on after the weekend ends, um, most probably on Tuesday I'll put it up on ERP system, G portal, जहाँ पे आप अपनी grading देख सकेंगे. So अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. You can tell me in the WhatsApp messages कि do you want me to share with the whole class or just you on the e portal, G portal rather. So if you only want it on the G portal, then you'll have to wait till Tuesday. अगर आप कहते हैं सर WhatsApp sheet भेज दें, no issue, we have no problem. Then I'm going to share it on the WhatsApp group. So I think I'll share it on the WhatsApp group ताकि किसी किस्म का भी कोई issue है marking में, because I'm also a human being. I can miss someone's assignment. कोई marks का मसला हो सकता है तो वो हम उसको उधर ही देख लेंगे. खैर जी, without wasting any time, let's start. Let me share the screen with you. G. So I hope all of you can see the slides. Recording with the obviously there is no issue of seeing the slide. G. So developing an effective business model. Whenever we are thinking about starting a business, whenever we are talking about a startup, जिसको हमने शुरू में ये देख रहे थे कि startup हो या new business हो, they're one and the same thing. It's just the difference of the language. So whenever you are planning of starting a business, you have to think of an idea, you have to think of an opportunity, you have to see the feasibility of that opportunity and business idea, and then you have to create a business model कि आप जो business करेंगे उसका model क्या होगा, operations क्या होंगे, आपकी revenue streams क्या होंगी, what would be the financials, आपका business mission क्या होगा, what will be your core strategy and so on. इन सबको हम देखेंगे. So the importance of business model is very significant. अगर आप उसको देखें, मतलब it is a very significant document. Most of the people, they usually fail not because their idea is not good or the opportunity they identified was not good, but they usually fail because they do not conduct a feasibility analysis, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, or either they do not have a sound business model. You can't have one business model for all types of businesses. ये हम आगे देखेंगे कि business models की कितनी different types होती हैं. So let's first see what business model is. मैंने again I have made these slides because this is a recorded lecture, तो वो chat में लिखना is very difficult. Plus you can always keep it with you for reference when you are attempting your project कि हाँ यार ये सारी चीजें हमारे पास हैं. एक और I was getting a request of lectures. I'm not sure because my Zoom cloud and laptop data is gone. But still, I'll send you some slides of the first topics that we have discussed so that you are on the same page as I am. Acha ji, a business model is a firm's plan or recipe for how it creates, delivers, and captures value for its stakeholders.
सो बिजनेस मॉडल आपको क्या बताता है कि एक जो नया बिजनेस स्टार्ट होने लगा है उसका प्लान क्या है, एंड हाउ इट इज गोइंग टू create, deliver, and capture value from its stakeholders or for its stakeholders. वैल्यू का हमें कॉन्सेप्ट पता है, वैल्यू का आम फहम जबान में मतलब है बेनिफिट. सो हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट बेनिफिट फॉर द स्टेक होल्डर्स. हु आर द स्टेक होल्डर्स? The employees are the stakeholders, the investors are the stakeholders, the owners are the stakeholders, and the customers are also the stakeholders. So all these stakeholders, how do you create benefits for them, how do you give benefits to them, obviously in terms of financial value as well as सोशल वैल्यू. क्योंकि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है. स्टार्ट में हमने मोटिवेशन डिस्कस की थी कि सोशल वैल्यू, दैट पीपल सी यू एज एन एंटरप्रेन्योर. सो फाइनेंशियल वैल्यू के साथ साथ सोशल वैल्यू, एंड ऑब्वियसली जो आपकी एक रिस्पेक्ट है, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दीज टू. The proper time to develop a business model is following the feasibility analysis. As we did the feasibility analysis in the last lecture, so that is why I have followed that lecture with this, because this is how the sequence should be. First, you understand what is entrepreneurship, आप entrepreneurship का model समझें, then you identify opportunity, then you do the feasibility analysis, and then you develop a model. So हम उस sequence में ही चल रहे हैं in which the startup is usually done or should be done. So it should follow feasibility analysis and prior to fleshing out the operational details of the company. So जब आप पूरी कंपनी की डिटेल्स दे रहे होते हैं और feasibility analysis कर चुके होते हैं, उसकी बीच में business model should fit in, because it follows up feasibility analysis really well कि अगर आपका business opportunity feasible है, so it pretty much makes sense that you should create a model for it. And once you create a model, then it is easier for you to flesh out the operational details. Flesh out का मतलब है कि आप अपनी details add करते हैं through a business plan. So a firm's business model is integral to its ability to succeed both in short term and long term. Why? Because it gives a direction. What does plan give? It gives direction. हम जब भी कोई travel plan करते हैं या किसी चीज को भी, हम जो भी चीज हमने करनी होती है, we create a plan. And why do we plan? Because it helps us to streamline things in the future. So इसी तरह business model is also a plan of owners, investors, जो भी आप इसको कह लें, या जो भी company आप start करें, it is that startup company's plan that what they are going to do in the future, both in short term and long term. Ideally, एक company का जो business plan है वो short term, बिजनेस मॉडल जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को अपील करना चाहिए, दोनों को कवर करना चाहिए जी. मूविंग ऑन, स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल्स. सो नाउ दे आर कैटेगरीज ऑफ बिजनेस मॉडल्स. हम जनरल कैटेगरीज डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल. Standard business models depict existing plans, recipes firms can use to determine how will they create, deliver, and capture value. Standard business models का मतलब है कि already जो different companies in across the globe, the business models those companies are using, you can pick any company's business models and use it for your own self. जिस तरह MySpace एक होता था, MySpace was a social networking website. उसका business model काफी हद तक फेसबुक ने पकड़ा और उसको आगे उन्होंने they improved it further. Now obviously MySpace से तो बहुत आगे निकला है Facebook, but you can actually pick up any standard business model and you can create your business model according to the plan that is already existing with some company. जिस तरह अगर आप इस वक्त जितनी भी सब्सक्रिप्शन मॉडल्स देखें, नेटफ्लिक्स आया था, फिर अमेजोन प्राइम आया, फिर इंडिया ने अपनी एप्स निकाल दी. सो ऑल ऑफ दोज एप्स दे आर फॉलोइंग अ सर्टेन बिजनेस मॉडल दैट वाज क्रिएटेड बाय नेटफ्लिक्स. अच्छा जी. सिमिलरली जो ऊबर का एक मॉडल था वो करीम ने उसको अडेप्ट किया. सो इन दैट कैटेगरी इट विल बी नोन एज स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल फॉर Kareem because they didn't create it themselves. There are a number of standard or common business models which are shown on the next two slides. अच्छा जी, अब जो standard और common business models है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं
कि वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। अच्छा जी, सो द फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल, जहां पे आप एडवर्टाइजिंग करके पैसे कमाते हैं। यू आस्क योर कस्टमर्स टू create their profiles on your website, and then you earn money from that advertising. This is Google or Facebook का model है. Instagram is also moving towards this model. The second is auction business model. You place product on your website or maybe on your store, and you ask the customer to make the auction. You put everything out there and you wait for the auctions. जिस तरह eBay करता है, ubid.com करता है, एक जमाने में Alibaba भी करता था, but now it is no more auction business model. Bricks and clicks business model. Bricks and clicks business model का मतलब ये है that you are also doing business online as well as offline. और कई दफा the the offline and online business are so blended कि आपको आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। इधर मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक एप्पल की है, ऑब्वियसली एप्पल स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर्स हो या ऑफलाइन स्टोर्स हो, यू गेट दैट ओमनी कंज्यूमर एक्सपीरियंस। ओमनी कंज्यूमर एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपको सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो या कोई भी चैनल हो। सिमिलरली आई गेस अल्फाता इज डूइंग प्रीटी वेल व्हेन इट कम्स टू ब्रिक्स एंड क्लिक्स बिजनेस मॉडल, क्योंकि सिंस कोविड, पहले उनकी वेबसाइट होती थी, बट सिंस कोविड they have moved very swiftly to deliveries and online shopping. फिर आपके पास फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस मिनीसो इज फॉलोइंग दिस फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। व्हाट दे डू इज दैट दे गिव अ फ्रेंचाइज। जब भी कोई नया मॉल खुलता है, और फ्रेंचाइजी जो होता है वो हमेशा ब्रांच, मतलब कि फ्रेंचाइज लेके किसी नई जगह पे या जहाँ पे मिनीसो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे खोल लेता है। तो पाकिस्तान में उनका ये मॉडल इज वेरी सक्सेसफुल। Freemium business model. Freemium business model is when you give something for free, and for something extra you start charging premium. So it is when you charge something that is premium, or few services you charge premium and few services you give for free. जिस तरह अगर आपने Z5 ऐप देखी हो, अगर आप Z5 ऐप पे जाएं, इंडियन ऐप है, तो there are few things that are available, you can play and watch them for free, पुरानी फिल्में, पुराने ड्रामे। बट इफ यू वांट प्रीमियम कंटेंट, अगर आप राधे फिल्म देखना चाहते हैं उस पर, तो यू विल हैव टू सब्सक्राइब। सिमिलरली सावन ऐप है एक, इंडियन और इंग्लिश गानों की, पाकिस्तानी गानों की, तो वो आप उस पर गाने सुन सकते हैं, बट यू हैव टू bear the ads after every two songs. But they say if you pay us the premium, there won't be any ads. YouTube also does this कि ad free कर लें, तो उनका भी अब freemium business model ही है। Low cost business model. At times companies go for low cost business models, जिस तरह एक जमाने में एयर ब्लू और शाहीन एयर का था कि they went with the लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल कि हम कम प्राइस चार्ज करेंगे और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप साउथ वेस्ट एयरलाइंस को देखें या वॉलमार्ट को देखें, तो दे आर यूजिंग दिस लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल। इम्तियाज भी जब आया था तो इम्तियाज ऑल्सो वेंट ऑन टू दिस स्ट्रैटेजी ऑफ लो कॉस्ट मॉडल। मेट्रो ने ये बड़े अरसे फॉलो की, बट साउथ वेस्ट एयरलाइंस और वॉलमार्ट, दे आर द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल, जहाँ पे आपकी कॉस्ट कम होती है, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे खेल रहे होते हैं। गोरमे की अगर आप बात करें, तो गोरमे इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल के इतनी ब्रांचेस खोल दो, सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर दो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सकें। मैन्युफैक्चर रिटेलर मॉडल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चलता है, जहाँ पे यू आर द मैन्युफैक्चरर योरसेल्फ एंड यू आर ऑल्सो इन द रिटेल। सो टोयोटा, जिस तरह Toyota manufactures the cars and then it is also in the retail. Honda भी ऐसे ही है। Tesla Motors जो आजकल है, it is a very prime example of manufacturer retailer business model, that you are the manufacturer of a certain product and you are also in the retail, you are selling it yourself. Automobile industry में, I'm again repeating, automobile industry में this is very common. Paint industry में it is very common कि आप manufacturer भी होते हैं और आप retailer भी होते हैं। Multiform does it, उनके बड़े जबरदस्त showrooms आपको मिलेंगे, but Multiform also hires retailers to sell their products. अच्छा जी, उसके बाद peer to peer business model,
जहाँ पे आप you ask the people to share your product or service with another person, and you give certain benefits to the first user. For instance, अगर मैंने Uber की ride ली, तो Uber will prompt me कि I share the coupon code with 5 more passengers, और अगर वो 5 लोग राइड लेते हैं तो मुझे एक और कूपन मिल जाएगा, डिस्काउंट कूपन. दिस इज हाउ एयरबीएनबी एंड ऊबर वर्क्स. इसको आप पीयर टू पीयर मार्केटिंग भी कहते हैं, पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल. ये एक बड़ा कॉमन बिजनेस मॉडल है और बड़ा बड़ा ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है आजकल, जहाँ पे यू शेयर बेनिफिट्स. देयर इज अ वेबसाइट पैट पैट, बच्चों के कपड़े वहाँ पे मिलते हैं. सो आई बाय फ्रॉम दैट वेबसाइट. इट्स एन अमेरिकन ब्रांड. So what they do is, if you are buying from them, they generate a coupon. If you share a coupon with 5 people, then you are going to get 20% on the same coupon through their app, and those 5 people are going to get 10% discount from your coupon. So this is how peer-to-peer business model works. अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है रेजर एंड ब्लेड्स बिजनेस मॉडल. रेजर एंड ब्लेड्स बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि जहाँ पे यू हैव मेन प्रोडक्ट एंड विद इट यू हैव अ कैप्टिव प्रोडक्ट. कैप्टिव प्रोडक्ट का मतलब है वो प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट के बगैर यूज नहीं हो सकता, और वो मेन प्रोडक्ट जो कैप्टिव प्रोडक्ट के बगैर यूज नहीं हो सकता. जैसे गेम कंसोल्स एंड गेम्स. इफ यू बाय अ गेम कंसोल but there are no games, you cannot play. So you need games to make game consoles work. Just like you need blades for a razor to work, you need ink cartridges for printers to work. तो कई दफा आपका बिजनेस मॉडल ऐसा होता है जहाँ पे यू हैव दिस रेजर एंड ब्लेड्स बिजनेस मॉडल. जितनी भी आपकी ये कार शोरूम्स होते हैं, दे हैव दीज वर्कशॉप्स. तो उस वर्कशॉप्स का बिजनेस मॉडल, उन वर्कशॉप्स का सिर्फ बिजनेस मॉडल यही होता है कि दे सेल यू द कार, बट दे हैव ऑल द कार एक्सेसरीज, द इंजन ऑयल, the oil filters, the air filters. So once you reach 5,000 mileage or 4,000, whatever ऑयल ग्रेड यू आर यूजिंग, तो वो आपको चेंज करना पड़ता है. सो प्रिंटर्स एंड इंक cartridges, it also works like this. सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल जी, नेटफ्लिक्स एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल की, एंड आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट टू. पाकिस्तान में सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है थैंक्स टू द इंटरनेशनल ब्रांड्स. जिस तरह इंडिया में, अमेरिका में, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब कार्स. आई डोंट नो व्हेन we are going to have subscription business models of car in Pakistan, but that is going to be an instant success. Just if a student is coming to Lahore from Islamabad for like 4 years degree, so बजाय कि वो यहाँ पे गाड़ी खरीदे, he can actually subscribe द कार. जैप कार है, जिप कार है, इंडिया में बड़ा एक इसका कॉन्सेप्ट है इंडिया में. बल्कि आप यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर द फर्नीचर. देयर इज अ कंपनी फर्लिंको जिसकी मैं कंसल्टेंसी करता हूँ. आई हैव क्रिएटेड देयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल. फिर आपके पास आता है ट्रेडिशनल रिटेलर बिजनेस मॉडल जी, जहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाते हैं और आप रिटेलर को दे देते हैं, या आप खुद रिटेल में फुल फ्लेज रिटेल में आ जाते हैं, जैसे अमेजोन करता है. अमेजोन इज द बिगेस्ट ऑनलाइन रिटेलर एट द मोमेंट. मेट्रो एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है, ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस मॉडल है. ये प्रोडक्ट आप रिटेल स्टोर पे बेचें, बीट ऑनलाइन और ट्रेडिशनल. सो अमेजोन की बड़ी प्राइम एग्जांपल है, बट क्योंकि लोगों को पता नहीं है तो इसलिए I have written metro here because it's a desi example. So these are some of the standard business model जो already exist करते हैं, and if any of these models suit your business idea, you are going to pick those. ये याद रखिएगा, इस लेक्चर को बड़े गौर से सुनिएगा. I have explained all the business models, that how they actually work, and for your business idea or business opportunity, you have to pick any of these models, because I doubt that you can create a disruptive business model. The second category is disruptive business model. Disruption का मतलब होता है आप कोई ऐसी नई चीज लेके आए जो मार्केट को थोड़ा चेंज कर दे, और something that is entirely new, completely new. So इसकी डेफिनेशन भी, अगर आप एक्सप्लेनेशन भी देखें तो वो भी ऐसी है. Disruptive business models are the models which are rare,
are ones that do not fit the profile of a standard business model. ये किसी खास business के लिए create किया जाता है जिसको unique models कहते हैं. जिस तरह I started a business, Intellectual Hub Private Limited. We used to call it Intellectual Hub. We named it Intellectual Hub, Wisdom at Work. उसका जो revenue model था या जो business model था, that was very unique. उसका मॉडल ये था कि वी हैड नो फिक्स्ड एम्प्लॉइज, व्हाट वी हैड वाज रेवेन्यू मैट्रिक्स के देयर वुड बी एन elite पैनल ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर वुड बी अ लीड पैनल ऑफ एम्प्लॉइज. जब भी कोई कंसल्टेंसी, इट वाज अ कंसल्टेंसी हाउस, जब भी कोई कंसल्टेंसी आएगी, first it will be offered to elite panel, and then if elite panel is unable to do it or busy with some other assignments, then it will go to lead panel. So elite panel, whoever is on the elite panel, he is going to get 2.5% of the overall revenue of the company, and whoever is the lead panel is going to get uh, his percentage from the project he is on only. He won't get anything from the overall uh, revenue of the company. So that was a very disruptive business model. Obviously, it didn't work out well, not because of the business model, but because we were four partners in that company, and uh, I guess because of the visionary differences, we parted ways. हमें अलग होना पड़ा, but it was a very disruptive business model. They are impactful enough that they disrupt or change the way business is conducted in an industry or an important niche within an industry. जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि जितने भी disruptive business models होते हैं, they are disruptive because they have an impact on an industry and they change the way the industry perceives business model. इनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं कई दफा. एक्चुअली जितने भी पहली दफा कोई प्रोडक्ट आते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, वो डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल के साथ ही आते हैं. Dell came up with a disruptive business model, direct to consumer computer sales. Before that, there was no concepts of direct to consumer computer sales, which allowed customers to customize their computers. उससे हुआ क्या फायदा कि this industry welcomed the concept of customization. उससे पहले लैपटॉप्स को या कंप्यूटर्स को कस्टमाइज करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. Online text ads on search engines allowed advertisers to place ads for products that searchers were already searching for. Yahoo and Google were the pioneers who started this search engine advertising. कि कस्टमर जो ऑलरेडी ढूंढ रहा है उसी से रिलेटेड उसको एड्स नजर आए, जिसको आप गूगल एड्स कहते हैं. याहू तो खैर अब it started it was one of the pioneers that brought this disruptive business model, but Google aced it and Yahoo somewhere it lost the zest. Software as a service, salesforce.com gives you the complete software. अगर आपको आजकल के ज़माने में Hootsuite का अगर आपने नाम सुना हो, Hootsuite gives you the complete software to manage your social media. इसको ज़रूर देखिएगा, इनकी वेबसाइट भी है HOOTSUITE. So software as a service, by moving software to the cloud, allowed users to access the software and their data from anywhere there was an internet connection. अब Google Docs भी तकरीबन यही करता है, but Salesforce.com was the first company that came up with this business model, very unique for that time. अब तो ये चीजें बड़ी कॉमन लगती हैं, but back in 90s and early 2000s, these were like big creativities. अच्छा जी, cloud based service to connect riders and people willing to provide rides. It provided riders with an app that connects them with the owners of private cars. Uber और Lyft का ये concept था, they introduced this disruptive business model. कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार you are connected, you can be connected to the drivers with a certain app. अगर हम पाकिस्तानी context में बात करें तो आप घर बैठे बैठे you can see who is available near you and that person can accept your a request of a ride and then you can go to any part of the city. घर में बैठे बैठे आपको ये सब करना पड़ता है. जब हम छोटे थे उसका कॉन्सेप्ट ये होता था कि एक स्टैंड बना होता था रिक्शास का और टैक्सीज का, उन पे भी बड़ी किस्मत होती थी अगर आपको टैक्सी या रिक्शा मिल जाए. कोई एक बंदा पहले जाता था वहां से टैक्सी या रिश्ता कह रहा हूँ रिक्शा लेके आता था और फिर इस तरह सवारियां मिलती थी और वो सब कुछ होता था. मैं रिश्ते की बात मेरे ज़हन में आ रही है, अगर मेरी बेगम ने सुन लिया उससे मुझे मार देना है. अच्छा जी,
हमें ये तो पता लग गया categories of business models that there are some standard business models and there are disruptive business models. But what or how does a business model template look like? बिजनेस मॉडल में होनी क्या क्या चीजें सही है? सर ये तो कहानी पता लग गई कि बिजनेस मॉडल बनाना है, लेकिन इसमें चीजें क्या होंगी? सो देयर आर फोर मेजर एस्पेक्ट्स. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, दुनिया में बिजनेस मॉडल की कोई एक खास टेम्पलेट नहीं है, बट दिस इज वन टेम्पलेट. ये आपको, दे आर टू पीपल, बेरिंगर एंड आयरलैंड, जिनकी बुक्स भी एंटरप्रेन्योरशिप पे बड़ी अच्छी बुक्स हैं. They made this business model template, and this is widely used in various educational institutes, startup platforms, जहाँ पे startups different startups को consultancy दी जाती है. So they are using this business model. I also use this business model whenever I'm consulting a startup. So ये एक business model template है जिसमें there is a core strategy, then there is a section of resources, there is a section of financials, and then there is a section of operations. So in core strategy, we have our business mission, we have basis of differentiation, we have target market identification, and we have product market scope. ये चार चीजें. And in resources, we have core competency, we have key assets, we have cost structure, we have financing or funding, and the revenue streams कि हम पैसे किस तरह जनरेट करेंगे. In operations, we have product or production, या अगर आपकी सर्विस है तो वो क्या है, what channels you are going to use, and what key partners do you have. So ये तो आपके पास है business model template. अब इस बिजनेस मॉडल टेम्पलेट्स में जो चार मेजर चीजें, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज फोर थिंग्स, इनको हम इंडिविजुअली देख लेते हैं. सो द फर्स्ट इज कोर स्ट्रैटेजी. कोर स्ट्रैटेजी हैज फोर पार्ट्स. इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस मॉडल, जिस तरह हम देख चुके हैं. कोर स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब्स how the firm plans to compete relative to its competition. So core strategy is talking about competition and firms plans to compete. It has four primary elements, as we have discussed: business mission, basis of differentiation, target market, product market scope. हम इनको one by one देखते हैं so that you have the clarity. जी, सबसे पहले mission. We already know what mission is. This word usually brings us to the question: what is the difference between mission and vision? Vision is usually where you want to be. Mission is why do you exist and how you are going to achieve the vision. So a business mission or mission statement describes why it exists and what its business model is supposed to accomplish. कि आप मार्केट में हैं क्यों, and what you want to accomplish. इसी के साथ होता है vision. Vision is where you want to be, and mission is how you are going to reach there through your business model. आपका मकसद क्या है? If carefully written and used properly, a mission statement can articulate a business overarching priorities and act as its financial and moral compass. मिशन स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि जी बिजनेस की प्रायोरिटी क्या है. इज इट मनी, इज इट मॉरल्स, इज इट डेवलपमेंट, इज इट वेल्थ. वेल्थ इज डिफरेंट फ्रॉम मनी, ये हमेशा याद रखिएगा. इज इट इकोनॉमिक प्रोग्रेस और कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू contribution to the economic progress of the country. So you have to see कि आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है. इट मस्ट सेट अप योर प्रायोरिटीज राइट एंड ऑल्सो एक्ट एज फाइनेंशियल एंड मॉरल कंपस. क्योंकि आपका मिशन ही आपको बताएगा कि जी व्हाट आर द फाइनेंशियल टारगेट्स, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपके मॉरल गोल्स क्या हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते. A well-written mission statement is something that a business can continually refer back to as it makes important decisions and other elements of business model. या आप सबको पता है कि मिशन स्टेटमेंट का मकसद ही ये, यू कैन ऑलवेज गो बैक. जब आपका एक मिशन अचीव हो जाए, यू सेट अप अ न्यू मिशन दैट इज वेरी कंसिस्टेंट with your vision, and you can always refer back to it whenever you are trying to align your business model and its elements with the mission and vision statement. Acha ji, moving on.
Sorry, I'm in office, so I receive calls every now and then. Basis of differentiation. The second is basis of differentiation. It's important that a business clearly articulate the points that differentiate its product or service from competitors. So आपकी जो differentiation है, that is very important. जब तक आप अपने competition से different नहीं होंगे, nobody is going to buy your product, right? अगर मैं आज एक और KFC खोल लूंगा, so there are hardly any chances that people would come to my restaurant. A company's basis of differentiation is what causes consumers to pick one company's products over another's, जिसको हम USP कहते हैं या वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और वैल्यू प्रोपोजिशन, समथिंग दैट यू हैव or any edge that you have over the competition. Usually core competency होती है that can, or competitive edge होता है that gives you differentiation. It is what solves a problem or satisfies a customer need. जो हम पहले बात कर चुके हैं, solving a problem or satisfying a customer need. This is usually you do through value proposition, and you have to do it better than the competition. It is best to limit a company's basis of differentiation to 2 or 3 key points. ऐसा ना हो कि आप 10-12 डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ढूंढना चाहें अपने प्रोडक्ट में और उसको आप उसके साथ एसोसिएट करना चाहिए. देयर हैज टू बी 1 to 2 और मैक्स 3 की पॉइंट्स ऑन विच यू आर क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन. जिस तरह टेस्ला का एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंशिएशन पॉइंट है, दैट इज इट इज एन इलेक्ट्रिक कार, इट इज अ कार ऑफ द फ्यूचर. अगर दो कर लें आप, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर, इट्स एन इलेक्ट्रिक कार. जब टोयोटा प्रियस आई थी, उसका एक बड़ा सिंपल सा डिफरेंशिएशन पॉइंट था, बड़ा क्लियर था, दैट इट इज हाइब्रिड, इट इज फ्यूल एफिशिएंट. तो आपकी जो डिफरेंशिएशन, सबवे की बड़ी क्लियर डिफरेंशिएशन है दैट इट इज हेल्दी ईटिंग. यू आर ईटिंग स्नैक्स बट इट दे आर हेल्दियर. सो डिफरेंशिएशन इज वेरी क्लियर. Make sure that your points of differentiation refer to benefits rather than features. अच्छा, एक चीज बड़ी जरूरी है कि वट एवर डिफरेंशिएशन और around whatever you are creating your differentiation, it has to be a benefit, not the feature. Because electric car का एक benefit है that it is obviously energy consumption उसकी बड़ी बेहतर है और energy conservation बड़ी जबरदस्त है, because there is a cry across the globe that natural resources are dying. So इसीलिए इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव किया गया. एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है. सो दीज फीचर्स एक्चुअली एड बेनिफिट्स. इट इज नॉट जस्ट अ मेयर फीचर. फीचर होता है पैनोरामिक सनरूफ. इट हैज नो बेनिफिट इन पाकिस्तान, बट इट इज अ फीचर. पाकिस्तान में तो शायद ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन चल जाता है, लेकिन बाहर नहीं चलता. तो पूरी दुनिया में शायद ये ना चले, बिकॉज ऑल द कार्स हैव पैनोरामिक सनरूफ. सो जो आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो फीचर के साथ साथ एक बेनिफिट भी होना चाहिए, और यू मस्ट बी एबल टू आर्टिकुलेट दैट फीचर इनटू बेनिफिट, कि हाउ दिस फीचर will create benefits from for the customers. Unless you can do this, you are not going to be successful in the business or with your business. अच्छा जी, टारगेट मार्केट. अगेन ये आप मार्केटिंग में पढ़ चुके होंगे. टारगेट मार्केट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट element of the core strategy. The identification of the target market in which the firm will compete is extremely important. इससे अगर हम एक स्टेप पीछे चले जाएं, तो first you have to create segments. Now segments, again demographic segmentation करेंगे, geographic करेंगे, combination करेंगे, psychographic segmentation करेंगे, या behavioral segmentation करेंगे. First you make segments and then you will draw a target market from those segments. A target market is a place within a large market segment that represents a narrow group of customers with similar interests. Target market के बारे में उम्मीद करता हूँ you already know that target market is any group of customers that have similar needs or will respond similarly to the company's marketing. A firm's target market should be made explicit in the business model template. अगर आप अपनी target market ही सही तरीके से define नहीं कर सकेंगे, then you're always going to suffer with your business model as well as your marketing strategy, because आपको यही नहीं पता होगा कि whose needs you're going to satisfy. So it is very important to articulate the target market.
बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट मार्केट स्कोप, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन प्रोडक्ट मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस, बट फिर भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, तो मैं इसको दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, या मैंने इधर कुछ लिख दिया सो दैट यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अ कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट स्कोप डिफाइंस द प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स ऑन विच इट विल कॉन्सेंट्रेट. फॉर इंस्टेंस, अगर आज मैं कहता हूँ कि मैंने एक यूनिवर्सिटी खोलनी है डीएचए में, सो माई प्रोडक्ट इज दैट यूनिवर्सिटी, दैट इज एजुकेशन, and my market is DHA. So I have to concentrate on it, and I have to see that do do that market. I'm talking about DHA. मतलब कि क्या उधर मेरी एक यूनिवर्सिटी बनाने की जगह है. There's LUMS on one side, there's LSE on one side, ITU is planning a university there, Garrison has a university there. So do I have a space in that market, or are there any customers for me in that market? Is there a प्रोडक्ट मार्केट फिट, क्या मेरी यूनिवर्सिटी उधर फिट होती भी है उस मार्केट में या नहीं, या मुझे इस साइड पे आना चाहिए जॉर्ज टाउन और राइवंड साइड पे. सो वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. मोस्ट फर्म्स स्टार्ट विद अ narrow product market scope and pursue adjacent product and market opportunities. अगर आप लेयर्स की एग्जांपल देखें तो लेयर्स ने डीएचए से स्टार्ट किया था, एक छोटी सी मार्केट से उन्होंने स्टार्ट किया था कि यार हमें लगता है जो हमारी प्राइस है उसमें डीएचए के लोग ही हमारे पास आएंगे. बट द रिस्पॉन्स वॉज सो ओवरवेलमिंग कि उनको अपना स्कोप बढ़ाना पड़ गया. दे मूव टू G1 market, and then they moved to MM Alam Road, and now they are also in Allama Iqbal town. So with the acceptance in the market, their scope also broaden. So उसमें एक बड़ी important चीज है कि आपको साथ साथ अपनी opportunities assess करनी. Even if you start narrow, you have to keep on seeing your opportunities. Vena's Kitchenette ने भी बिल्कुल यही किया था. They started with DHA, they started very small, and then they had to move to Gulberg too because of the influx of the customers. In completing the business model template, a company should be very clear about its initial product market scope and project 3 to 5 years in the future in terms of anticipated expansion. कि आपका इनिशियल प्रोडक्ट मार्केट स्कोप आपको पता होना चाहिए, एंड देन यू गो विद द फ्लो. इफ द मार्केट रिस्पॉन्स इज वेरी पॉजिटिव, देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर द एंटिसिपेटेड एक्सपेंशन. आप उसको पहले भी कर सकते हैं. अगर आपने 5 साल में सोचा हुआ है कि मेरी 15 बेकरीज होंगी, तो आप उसको 2 साल में भी कर सकते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस. सो बिजनेस मॉडल की ये इंपॉर्टेंस है कि आपके पास सब कुछ लिखा होता है, यू कैन ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक कि अच्छा यार ये मेरा प्लान था, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, सो मैंने ये अचीव कर लिया, नाउ हाउ टू मूव फर्दर. सो इसीलिए कोर स्ट्रैटेजी में ये 4 चीजें हमने जरूर करनी है. देन द सेकंड पार्ट ऑफ द टेम्पलेट इज रिसोर्सेज. Obviously, resources are very important. No company in this world can survive without resources. जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम यूजली फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अलावा जितनी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं उनकी बात करते हैं, जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल रिसोर्सेज शामिल होती हैं. सो रिसोर्सेज आर द इनपुट्स अ फर्म यूजेस टू प्रोड्यूस, सेल, डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्विस अ प्रोडक्ट और सर्विस. सो आपको अगर आपकी कंपनी है उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर उसको बेचने के लिए, फिर उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए, और अगर सर्विस है तो उसको सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस देंगे वो लोग चाहिए होते हैं. या अगर प्रोडक्ट है जिसकी सर्विसिंग ज़रूरी है, जैसे एसी है, जैसे लैपटॉप है, सो you need resources, both human resources and other resources. A firm's most important resources, both tangible and intangible, must be difficult to imitate and hard to find a substitute for. Usually जो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री है या फैशन इंडस्ट्री है, या इवन अगर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में जाके देखें, फैशन इंडस्ट्री का ही पार्ट है, तो वहां पे यू क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द रिसोर्सेस जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं. क्योंकि जितना अच्छा जितनी इंपॉर्टेंट सेल्स पर्सनल की आई गेस ज्वेलरी इंडस्ट्री में है, उससे ज़्यादा सिर्फ मेरे ख्याल में बैंकिंग या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो सकती है, जहाँ पे आपने किसी से पैसे निकलवाने होते हैं बगैर कोई चीज़ दिखाए. ठीक है. सो आई गेस रिसोर्सेज इन दीज इंडस्ट्रीज, अगर the jeweler shops or the insurance companies who have amazing human resources,
they usually become more successful than the companies who do not have a very good sales force. This stipulation is necessary for an individual company's business मॉडल टू बी कंपेरेटिव ओवर द लॉन्ग टर्म. रिसोर्सेज आपके लिए इसलिए ज़रूरी है और ये चीज़ डिफिकल्ट टू इमिटेट एंड हार्ड टू फाइंड इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इफ दिस इज नॉट अवेलेबल विद योर कंपनी और if it is not ingrained in your business model, then competition will come and take over because they may come up with the resources that are difficult to imitate and hard to find a substitute for. So अगर आपकी resources आपके competition से अच्छी नहीं होंगी या for some reason if you do not understand the resources of your competition then you won't be able to sustain for a long period of time. अपने साथ साथ अपने कंपटीशन की रिसोर्सेज का भी आपको अंदाजा जरूर होना चाहिए. कोर कॉम्पिटेंसी जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंसी. इट इज अ स्पेसिफिक फैक्टर और कैपेबिलिटी that supports a firm's business model and sets it apart from its rivals. At times it is a network. जिस तरह HPL की core competency मुझे लगता है कोई ना उनकी सर्विस है ना कुछ है, it is their network. पीआईई की कोर कॉम्पिटेंसी हमारे लिए सिर्फ इतनी है कि इट्स अ नेशनल कंपनी, दैट्स इट. उसके अलावा मेरे ख्याल में उसकी कोई कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है हमारे लिए. और कई दफा द ब्रांड हैज सफर्ड सो मच इन टर्म्स ऑफ रेप्यूटेशन कि कोई स्पेसिफिक फैक्टर भी उसको नहीं बचा पाता. जैसे इन माय केस इट इज पीटीसीएल. आई नो इट इज अ पाकिस्तानी national telecom brand, but still their services are so pathetic that I do not even consider that special factor. सिमिलरली कोई भी ब्रांड आप उठा लें आपको उसकी कोई ना कोई कोर कॉम्पिटेंसी जरूर नजर आएगी. जैसे गोरमे की कोर कॉम्पिटेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाज इट्स प्राइस. और वही उनका बिजनेस मॉडल है. जिस तरह मैंने बिजनेस मॉडल्स के एग्जांपल में बात की थी, लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल. वो कहते हैं खास क्वालिटी एक खास प्राइस में दी जाए तो पीपल विल बाय इट and it still sets it apart from its rivals. On the other hand, अगर आप रीनास किचनेट या किचन कुजीन की बात करें तो उनकी कैपेबिलिटी हमेशा क्वालिटी रही है and they charge premium and people buy from them and it sets them apart from their rivals. A core competency can take on various forms such as it can be a technical knowledge, it can be an efficient process, it can be a trusting relationship with customers. अगर हम सोनी की बात करें, आई गेस सोनी के साथ इतना ज्यादा ट्रस्टिंग रिलेशनशिप है पाकिस्तानियों का कि दे ऑलवेज से कि यार अगर टीवी लेना है एलईडी लेनी है तो सोनी की लो. टेक्निकल नो हाउ कई दफा आप किसी टीम के साथ काम ही सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि दे आर टेक्निकली सुपीरियर. पाकिस्तान में इफ एनीबडी वांट्स टू हैव डिजिटल मार्केटिंग दे गो टू ब्रेमर्स because they have the technical know-how of the field. They are the first ones. अगर आपने कोई IT से रिलेटेड करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड करना है या इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड करना है तो you will go to NetSol. They enjoy this core competency on the basis of technical know-how. फिर आपके पास आ जाता है efficient process. The companies at times कंपनी के पास टेक्निकल नो हाउ नहीं होती, इतने ज्यादा कोई एक्सपर्टीज भी नहीं होती, बिल्कुल नए होते हैं, बट दे हैव अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस. मैकडॉनल्ड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टिल इट थ्राइव्ड ऑन दिस प्रोसेस. मैकडॉनल्ड्स खाना को बहुत अच्छा नहीं है बट देयर स्टैंडर्डाइजेशन देयर प्रोसेस इज सो गुड दैट दे कैन एक्चुअली मैनेज द ड्राइव थ्रू डिलीवरीज. आप कोरोना के दौर में ड्राइव थ्रू को उन्होंने जिस तरह मैनेज किया इट इज एग्जाम्पलरी. और एक्सपर्टीज इन प्रोडक्ट डिजाइन जिस तरह एप्पल हैज दिस एक्सपर्टीज इन प्रोडक्ट डिजाइन. रोज रॉयस, BMW, मर्सिडीज, जर्मन ब्रांड्स जो हैं दे हैव दिस एक्सपर्टीज इन प्रोडक्ट डिजाइन दैट इट बिकम्स देयर कोर कॉम्पिटेंसी. अच्छा जी, मोस्ट स्टार्टअप्स विल लिस्ट 2 to 3 कोर कॉम्पिटेंसीज इन देयर बिजनेस मॉडल टेम्पलेट. ज्यादातर स्टार्टअप जिससे हमने पहले बात की थी जो बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू कोर कॉम्पिटेंसीज. सो दो या तीन भी नहीं, अगर दो हैं दैट इज फाइन, अगर तीन है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज होनी नहीं चाहिए बिकॉज ओवर प्रॉमिसिंग यूजुअली लीड्स टू अंडर डिलीवरी. की एसेट्स, अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. की एसेट्स आर द एसेट्स दैट अ फर्म ओन्स दैट एनेबल इट्स बिजनेस मॉडल टू वर्क. जो भी आपका बिजनेस मॉडल है
उसमें there has to be some key assets. Those assets can be physical, can be financial, can be intellectual or human, or all can be related. इधर मैंने जो चार एसेट्स की बात की है उसकी डिटेल भी दे दी है। आप भी जब अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे, बिजनेस मॉडल डिफाइन करेंगे, उसमें आपने ये एस्पेक्ट जरूर शामिल करना है। जिस तरह फिजिकल स्पेस आपके पास कौन कौन सी यूज करेंगे, इक्विपमेंट क्या है, व्हीकल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स क्या है। व्हेन वी हैड अ डिजिटल एजेंसी इनिशियली, there were three brands that rejected us because the equipment in our office was not up to the mark। उनको लगा कि वी आर न्यूबी इन द मार्केट, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और हम वील मेस अप देयर ब्रांड रेपुटेशन। ऑन द अदर हैंड देयर हैव बीन सम ब्रांड्स जिन्होंने जब हमने अपना ऑफिस बेहतर किया और अपना इक्विपमेंट बेहतर किया, दे डिड वर्क विद अस। सो फिजिकल एसेट्स डू मैटर। इंटेलेक्चुअल एसेट्स आपके लिए भी कैंपस मैटर करता है जब आप यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं, बिकॉज दैट इज फिजिकल स्पेस इज वन ऑफ द मोस्ट enticing factor for undergrad students। Intellectual assets include resources such as patents, trademarks, copyrights, trade secrets, along with the company's brand and its reputation। जिस तरह कोक का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल एसेट उनका फॉर्मूला है। सो दे इट इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। कोक का नाम एक जमाने में पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा था, कोक के नाम की वैल्यू सिर्फ। सो इंटेलेक्चुअल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड कैश, आपके पास लिक्विड कैश कितना है, आपके पास एसेट्स कितने हैं इन टर्म्स ऑफ कैश लिक्विडिटी, लाइंस ऑफ क्रेडिट एंड कमिटमेंट्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स। कि आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, कई दफ़ा आपके पास क्रेडिट लाइंस होती हैं बैंक से दैट यू कैन यूज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ज़्यादा बड़ी कंपनीज के साथ ये होता है, या छोटे स्टार्टअप फंडिंग ले लेते हैं इन्वेस्टर्स से। आजकल आपको बड़ा ये कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा होगा, इफ़ यू गो ऑन फेसबुक आपको हर दूसरे दिन आता है कि फ़लाँ स्टार्टअप को 2 मिलियन की फंडिंग मिल गई है, फ़लाँ आइडिया को 5 मिलियन की फंडिंग मिल गई है, एंड सो ऑन। ह्यूमन एसेट्स इंक्लूड अ कंपनीज फाउंडर और फाउंडर्स, its key employees and its advisors। very self explanatory कि human assets क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, the third part is financials, again very important। इसको भी हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं, बट आई विल वेरी क्विकली स्किम थ्रू इट। So why financials are important? Because it is the only section of a firm's business model that describes how it earns money, and this is the most important part। Thus, it is extremely important। Obviously, it is important because जब मैं एज एन इन्वेस्टर पैसा लगा रहा हूँ या एज ए बिजनेस ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद, एग्जैक्ट मकसद है यही, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू बी सेल्फ सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। फॉर मोस्ट बिजनेसेस, the manner in which it makes money is one of the most fundamental aspects of its business model। कि आप पैसे बनाएंगे कैसे, आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगी क्या। इसलिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है भी इसी से रिलेटेड, वो है भी इसी से रिलेटेड। A firm's revenue streams describe the ways a firm's revenue streams, sorry, somebody was in my office। A firm's revenue streams describe the ways in which it makes money। Some businesses have a single revenue stream while others have several other streams। जिस तरह अगर आप रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो वो रेस्टोरेंट्स जो सिर्फ ऑर्डर लेते हैं, खाना दे देते हैं, दे हैव वन रेवेन्यू स्ट्रीम। while there are some other restaurants जिनके जिनके जो स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग भी करती हैं, वो शर्ट्स भी बेचती हैं, वो की चेन्स भी बेचते हैं, वो शर्ट्स भी, वो कप्स भी बेचते हैं, देयर अदर थिंग्स टू एसोसिएटेड विद इट, एंड दे आर सेलिंग इट। जिस तरह अगर आप कभी स्टारबक्स कैफे गए हों, इफ यू हैव बीन टू यूरोप और अमेरिका, तो वहाँ पे उनकी एक पूरी वो विंडो बनी होती है वेयर यू कैन बाय द स्टफ which has uh, which is actually full of branded items। जहाँ पे branded items होती हैं, उस brand का नाम लिखा होता है, and you can buy that stuff। So that means they have uh, several revenue streams। अगर आप होटल इंडस्ट्री की बात करें, पीसी की बात करें, now PC has several revenue streams। they have restaurants, they have like obviously rooms,
देन दे हैव वेडिंग हॉल्स, देन दे हैव मीटिंग रूम्स जहाँ पे कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं, then they have gyms, then they have laundry shops, then they have bakery. So you see, then they have cafes. So they have several revenue streams. इसी तरह hospitals की several revenue streams होती हैं, उनकी dispensary होती है, उनकी cafeteria होता है, uh, उनके obviously lab test होते हैं, और फिर उनकी surgeries होती हैं. So there are some businesses that have only one revenue stream and there are others that have several revenue streams. अब चैनल्स पे भी बड़ा डिपेंड करता है, जो हम आगे देखते हैं कि आप किस किस चैनल से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन. कई दफा अगर आप ऑफलाइन थे और ऑनलाइन हो गए तो आपकी एक रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ गई, और अगर आप ऑफलाइन थे और ऑनलाइन हो गए तब भी आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ जाती है. Cost structure, a business's cost structure describes the most important costs incurred to support its business model. कॉस्ट स्ट्रक्चर की बड़ी इंपॉर्टेंस है जी. एट टाइम्स जो आप डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं, जो आप कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट करते हैं, इट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बिजनेस मॉडल में डिफाइन कर दें कि आपके आपके बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीज़ें होंगी, सो दैट यू कैन प्लेस अ कॉस्ट ऑन देम. जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो भी आपकी कोर स्ट्रैटेजी का पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड, द अमाउंट ऑफ कॉस्ट यू विल रिक्वायर, एंड देन यू कैन पुट इट असाइड. पुट इट असाइड का मतलब ये कि आप वो साइड पे करते हो, और फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाए आप उन चीज़ों को डेवलप करने के लिए, आपके की एसेट्स हो या आपकी डिफरेंशिएशन हो या आपकी कोर कॉम्पिटेंसी हो. So in order to achieve all that, you can always have that cost uh, fixed or worked out in your mind. Generally, the goal for this box in a firm's business model template is threefold. Now, cost structure has three reasons, और इसकी justification की वजह तीन चीजें. Identify whether the business is a cost-driven or value-driven model. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जी आप कॉस्ट ड्रिवन है, यानी कि आपकी कॉस्ट कम होगी और उसकी बेस पे आप प्रोडक्ट बेचेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. या वैल्यू ड्रिवन है कि आप बेनिफिट्स की बेस पे प्रोडक्ट बेचेंगे, कि आप प्रोडक्ट बना देंगे और आप कहेंगे दीज आर द बेनिफिट्स बाय दिस प्रोडक्ट. ठीक है. इसकी प्राइम एग्जांपल एरियल की मैं दूंगा और बोनस की दूंगा. बोनस इज वेरी कॉस्ट ड्रिवन, कि अब 10 रुपए में बोनस की बाल्टी भर धुलाई. ऑन द अदर हैंड सर्फ एक्सेल एंड एरियल दे ऑलवेज से कि जी दाग तो अच्छे होते हैं और हर किस्म का दाग हम साफ कर देंगे. सो for your understanding, this is how cost driven or value driven business model works. Identify the nature of a business cost. एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजें अचीव करने के लिए हाउ मच कॉस्ट डू यू नीड एंड व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ इट. इससे बिजनेस मॉडल में आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि व्हाट आर द कॉस्ट दैट आर एसोसिएटेड विद योर बिजनेस. एंड थर्ड इज मेजर कॉस्ट कैटेगरीज. जब आपको कॉस्ट नेचर ऑफ कॉस्ट का अंदाजा हो गया, फिर आपको कैटेगरीज का भी पता लग जाएगा कि व्हाट आर द कैटेगरीज, जो बेसिकली बिजनेस मॉडल की टेम्पलेट में कैटेगरीज हैं. ऑल आर दोज कैटेगरीज दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई जहां पे आपके खर्चे होने हैं जी. मूविंग ऑन, फाइनेंसिंग फंडिंग. आपको पैसे कहाँ से आएंगे, हाउ मच कैपिटल मनी वुड यू नीड, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, आपको ओवरऑल किस किस एक्सपेंस की कब कब जरूरत पड़ेगी, उसकी प्रोजेक्शंस कैसे करनी है. ऑल ऑफ दिस वुड बी डन इन दिस सेक्शन. Many business models rely on a certain amount of financing or funding to bring their business model to life. बिजनेस मॉडल में यूजली ये होता है कि आपको स्टार्टअप कॉस्ट का एक अंदाजा हो जाता है कि यार जगह लेने में, रिसोर्सेज हायर करने में, मार्केटिंग कोलैटरल्स डिजाइन करने में, की एसेट्स डिजाइन करने में वी विल नीड एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी. और आप यूजली वो एक्स अमाउंट ऑफ मनी कहते हैं कि अगर ये मेरे पास आ गई तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा. यूजली बिजनेस मॉडल इस चीज को फॉलो करते हैं. एट द बिजनेस मॉडल स्टेज, प्रोजेक्शंस do not need to be completed to determine the exact amount of money that is needed. आपने सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन करनी है. तो अपने बिजनेस प्लान में भी जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें एक अप्रोक्सीमेशन चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पे यू कैन नॉट डू एग्जैक्ट प्रोजेक्शंस कि यार मुझे कितने पैसे चाहिए हो सकते हैं. कई दफा देयर आर सम थिंग्स दैट आर एडेड इन द लास्ट मिनट. जिस तरह बहुत से स्टार्टअप्स, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स जो 2020 में अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे, वहां पे एक बड़ी उनकी कॉस्ट इनकर होगी कि दे हैड टू इंश्योर दैट देयर
manufacturing space is COVID free, or it is properly it fulfills all the hygienic requirements. So उनकी कॉस्ट बढ़ गई, वो उनके बिजनेस मॉडल में ऑब्वियसली पहले तो नहीं थी। अब तो जो भी कोविड के दौर में बिजनेस मॉडल बनाएगा, दे हैव टू लिव विद दिस रियलिटी ऑफ कोविड। सो वो इसको देखते हुए सारी चीजें करेंगे। एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट, वो आपको। सो दे आर थ्री कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट टू कंसिडर। एक कैपिटल कॉस्ट, कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए। वन टाइम एक्सपेंसेस, जैसे बिल्डिंग्स हैं, वेबसाइट बनानी है, एम्प्लॉयज की इनिशियल किसी चीज की अगर ट्रेनिंग है, जिस तरह करीम उबर ने जब आए थे तो एक ड्राइवर्स का साइन अप किया था और ड्राइवर्स की ट्रेनिंग की थी। सो दैट वाज लाइक वन टाइम कॉस्ट इन द बिगनिंग। फिर जब उन्होंने और ड्राइवर्स साइन अप स्टार्ट किए तो फिर उनको अपने डिफरेंट छोटे छोटे सेंटर्स बनाने पड़े। उसके बाद आ जाते हैं प्रोविजंस फॉर रैंप अप एक्सपेंसेस। मोस्ट बिजनेसेस इनकर कॉस्ट बिफोर दे अर्न रेवेन्यूज। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे कवर कर सकते हैं। जब आप फाइनेंसिंग और फंडिंग वाला सेक्शन करते हैं तो यू हैव टू सी कि how many expenses can you manage and what expenses you are going to do when, ताकि ऐसा ना हो कि पहले ही 3 महीने में आपके इतने ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाए। रैंप अप एक्सपेंसेस का मतलब है कि ऐसा ना हो कि यू रन आउट ऑफ मनी। सो यू ऑलवेज हैव टू कीप प्रोविजंस, कि आपके पास थोड़े से फंड्स इस तरह मैनेज्ड हों कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप उसको मैनेज कर सकें। ये ना हो कि आप कहें कि जी इसके तो मैं हम तैयार ही नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव रैंप अप एक्सपेंसेस। अच्छा जी, उसके बाद फाइनेंसिंग कंटिन्यूड है। Some entrepreneurs are able to draw from personal resources to fund their business. In other cases, the business may be simple enough that it is funded from its own profit from day one. Usually जो service oriented business होते हैं, that is why you see so many companies doing freelancing sort of work, because it doesn't involve a huge amount of money, और वो पहले दिन से ही अपना खर्चा निकालना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपको शवारमे वाले नजर आना शुरू हो जाएंगे। जब से पिछले 3-4 साल में आपको चाय और कैफे वगैरह नजर आना शुरू हो गए हैं। कोरोना के बाद आपको छोटे छोटे फूड स्टॉल्स नजर आना शुरू हो गए हैं, बिकॉज दीज आर द बिजनेसेस जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रॉफिट्स में से ही अपना डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंस निकाल सकते हैं। इन मेनी केसेस हाउएवर एन इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ फंडिंग और फाइनेंसिंग इज नीडेड। जब आपका स्टार्टअप का स्कोप, जो हमने प्रोडक्ट मार्केट स्कोप की बात की थी, व्हेन द स्कोप इज ह्यूज, एट टाइम्स यू हैव टू गो फॉर द एक्सटर्नल फंडिंग, जहाँ पे आपको इन्वेस्टर पिच बनानी पड़ती है। दैट इज द रियल बॉल गेम। और आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि आप एक आइडिया कंसीव करते हैं, उस आइडिया को आप इन्वेस्टर्स के सामने लेके जाते हैं। यू प्रेजेंट द आइडिया, इफ दे लाइक इट they'll fund you, if they don't like it they won't fund you. The business model template should indicate the appropriate amount of funding that will be needed and where the money will most likely come from. So जो आपका business model है उसमें amount of funding that is needed, it should be there, and from where the money will most likely come from वो भी आपको जरूर बताना चाहिए। और अगर आप ये बता सकते हैं कि पैसे कहाँ कहाँ खर्च होंगे और आप पैसे कमाएंगे कैसे जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स में ऑलरेडी होगा, so that would be great. It means your business model is complete in terms of finances. The last part of business model is operations. Operations are both integral to a firm's overall business model and represent the day-to-day heartbeat of a firm. क्या आपने करना क्या है, आपने कंपनी खोल ली, आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस में आपने आपके डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं या जो भी आपके मिशंस हैं वो अचीव कैसे होंगे, वो आपने डे टू डे अपनी जो स्ट्रीमलाइंड एक्टिविटीज हैं वो लिखनी है। जिस तरह बैंक का एक प्रोसेस होता है कि बैंक सुबह खुलता है, आप पहले सारा कैश गिनते हैं, फिर आप एटीएम मशीन को फिल करते हैं, एंड देन वो कैश आता है उसको आप एक हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं नोटों के हिसाब से, एंड देन हूएवर कम्स, तो वो अगर कोई चेक लेके आया है तो क्रॉस चेक को कैसे प्रोसेस करना है, अगर कैश चेक है तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, अगर कोई डिपॉजिट कर रहा है तो हाउ टू इंश्योर कि डिपॉजिट स्लिप सही भरी हुई है, वो एक पूरा ऑपरेशन है। सो ऑल ऑफ दैट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी बैंकिंग बिजनेस मॉडल।
इसी तरह हर इंडस्ट्री का, हर बिजनेस का एक अपना मॉडल होता है, अपने ऑपरेशंस होते हैं, दैट शुड बी आउटलाइन। यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन आपने देनी है, यू डोंट हैव टू ऐड डिटेल्स। ऑपरेशनल बिजनेस प्लान इधर नहीं बनाना। अच्छा जी, दिस सेक्शन फोकसेस ऑन हाउ फर्म्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो ऑब्वियसली वो एक बड़ी ज़रूरत है आपको। इफ अ फर्म सेल्स अ फिजिकल प्रोडक्ट, द product can be manufactured or produced in-house by a contract manufacturer or via an outsource provider। कहने का मतलब ये है कि अगर तो आप एक फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन होती हैं, या तो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इन हाउस, या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी और मैन्युफैक्चरर से जो आपके आपके प्रेमाइस पे या किसी और प्रेमिसेस पे, सॉरी, या आपके प्रेमिसेस पे या किसी और के प्रेमिसेस पे बना सके, या आप कंप्लीटली आउटसोर्स कर दें कि जी हमें ये प्रोडक्ट बना के दे दो। जिस तरह यूजुअली ऑल द all the world is doing this, that they outsource most of the stuff to China। चाइना में प्रोडक्शन होती है और फिर वो वापस भेज देते हैं फॉर असेंबलिंग। दिस डिसीजन हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फर्म्स बिजनेस मॉडल। इन तीनों में से आप जो भी करते हैं, और ये सर्विसेज में भी होता है, सर्विस आप आपकी इन हाउस कैपेबिलिटी है सर्विस देने की, या आप किसी और को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करेंगे सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए, या आप किसी आउटसोर्स, आप पूरा ही आउटसोर्स कर देंगे कि भाई तू जाने और वेंडर जाने, तू जो करना चाहता है कर ले। सो इट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फर्म्स बिजनेस मॉडल। जो आपके फाइनेंशियल मॉडल है, जो आपके रिसोर्सेज का एक एस्पेक्ट है, और जो आपकी आपकी कोर स्ट्रैटेजी है, उस पर ये बड़ा डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा कि आप इन तीनों में से क्या कर रहे हैं। इफ अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग अ सर्विस रादर देन अ फिजिकल प्रोडक्ट, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सर्विस विल बी प्रोड्यूस्ड शुड बी प्रोवाइडेड। कि आप सर्विस प्रोवाइड कैसे करेंगे, अगर आप एक बार्बर शॉप खोल रहे हैं तो उसमें किस किस किस्म की सर्विसेज होंगी, एंड हु विल प्रोवाइड देम, और उसके एस ओ पीज क्या होंगे। सो यूजली आप ऑपरेशन की जब आप बात करते हैं तो आप टेक्निकली एस ओ पीज की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अ कंपनीज चैनल्स डिस्क्राइब हाउ इट डिलीवर्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विस टू इट्स कस्टमर। कि मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचा कैसे रहा हूँ। इसमें एक तो आपकी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मैं डायरेक्टली कस्टमर को सेल करूंगा जैसे लीवाइस करता है अपने स्टोर्स पे, बल्कि लीवाइस तो अब कॉम्बिनेशन में ही करता है। क्या मैं डमास की तरह अपनी ज्वेलरी डायरेक्ट खुद ही बेचूंगा, या आई विल हैव इंटरमीडियरीज जहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, कुछ होलसेलर्स होंगे। जैसे नेस्ले की स्ट्रैटेजी है कि वो कहता है जी हम अल्फता को, मेट्रो को और जितने भी स्टोर्स हैं उन सबको अपना प्रोडक्ट दे देंगे और वो खुद बेचें। या मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा जैसे लिवाइस यूज कर रहा है कि वो अपने स्टोर पे भी बेचता है और बाकी स्टोर्स पे भी उसका सामान बिक रहा है। सो यू हैव टू डिसाइड चैनल, दैट व्हाट चैनल आर यू गोइंग टू यूज। Some firms employ a sales force that calls on potential customers to try to close sales। जिस तरह आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की हमने पहले बात की थी, आपकी क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री जो बैंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी बात की थी। यूजली दिस स्ट्रैटेजी इज यूज्ड वेयर देयर इज नो अदर वे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे आप लाइफ इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं, सो आई नीड सम कन्विंसिंग पावर, or I need some convincing. So there has to be someone who can tell me all the benefits of the product. Only then I am going to buy. So that is why it is an expensive strategy but an effective one. उस इंडस्ट्री में यही स्ट्रैटेजी चल सकती है। या अगर आपके हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका डेमो देना पड़ता है, उनकी कोई डिमॉन्स्ट्रेशंस अगर आपने देनी है, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसका डेमो जरूरी है, सो यू हैव टू एम्प्लॉय अ सेल्स फोर्स। अदरवाइज सेल्स आर ऑन द डिक्लाइन। लेकिन फिर भी टेकी प्रोडक्ट्स जितने हैं वहाँ पे फिर भी डिक्लाइन के बावजूद पर्सनल सेलिंग ज़रूर की जाती है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग दिस टॉपिक। Key partners, the last part of the operations is key partners. It is a final element of firm's business model. Startups in particular typically do not have sufficient resources to perform all the tasks necessary to make their business models work, so they rely on key partners to perform important roles. Because startups are usually new, they are still learning, they are still in learning phase.
and typically they cannot do everything on their own. So they need certain reliable partners जहाँ पे कुछ चीजें वो उनके साथ मिल के कर सकें, और who can help them out with certain things. जिस तरह जितने भी नए online stores हैं, they have certain partners who are managing their deliveries, or there are certain partners who are managing their packaging. So this is how key partners work. जो नेक्स्ट टेबल है उस पे कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप्स आर मेंशन्ड: जॉइंट वेंचर, नेटवर्क, कंसोर्शिया, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ट्रेड एसोसिएशंस. ये आप पढ़ लीजिएगा, एंड दैट प्रीटी मच एंड्स आवर topic for today. Hopefully I'll share the sessional evaluation soon. I'll see you, I hope to see you on Monday. Otherwise I'll send you another recorded lecture. अपना बहुत ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम.